अभी हम देखेंगे टाइप्स ऑफ सॉफ्ट स्किल। अब तक हमने क्या देखा, टाइप सॉफ्ट स्किल क्या होते हैं, उसका इंपॉर्टेंस पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में क्या होता है। नेक्स्ट अभी और वाई सॉफ्ट स्किल, वाई सॉफ्ट सॉरी, अभी हम देखेंगे टाइप्स ऑफ सॉफ्ट, ओके, टाइप्स ऑफ सॉफ्ट स्किल। टाइप्स ऑफ सॉफ्ट स्किल में important soft skill देखेंगे। Okay, so we are going, just what I had said earlier, we are going to focus on important soft skill, in depth soft skill। जैसे अभी आपको पता चल गया होगा कि कम्युनिकेशन स्किल, इंटरपर्सनल स्किल, एडेप्टेबिलिटी स्किल, सेल्फ अवेयरनेस, इमोशनल इंटेलिजेंस, एम्पैथी, टीम वर्क, वर्क इथिक, डेलीगेशन, लीडरशिप स्किल, कोलैबोरेशन स्किल, एडेप्टेबिलिटी स्किल, ये सभी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में इसका इंपॉर्टेंस बहुत है। ओके, सो अभी टाइप्स ऑफ सॉफ्ट स्किल देखेंगे। तो फर्स्ट है सेल्फ अवेयरनेस। सेल्फ अवेयरनेस मैंने कहा था कि अगर वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट सॉफ्ट स्किल का नाम क्या है, सेल्फ अवेयरनेस। सेल्फ अवेयरनेस खुद के बारे में कितना हमें पता है। इट इज एबिलिटी टू रिकॉग्नाइज एंड अंडरस्टैंड ओन थॉट, फीलिंग एंड एक्शन। देखिए, हमारे जो थॉट्स होते हैं या फीलिंग्स होते हैं या एक्शन होते हैं, उसके बारे में हमें कितना पता है, खुद के थॉट्स के बारे में, फीलिंग्स के बारे में और एक्शन के बारे में कितना पता है, उसे कहा जाता है सेल्फ अवेयरनेस। इट हेल्प्स टू ऑब्जर्व ओन स्ट्रेंथ एंड वीकनेस। उससे क्या होता है, जो हमारे स्ट्रेंथ और वीकनेस होते हैं उसको आइडेंटिफाई कर पाते हैं। ओके, एक्चुअली वीकनेसेस मीन्स एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट। ओके, एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट जिसे हम इम्प्रूव कर पाएंगे, इम्प्रूव कर सकते हैं। डेवलपिंग सेल्फ अवेयरनेस इज इम्पोर्टेंट फॉर पर्सनल ग्रोथ एंड बिल्डिंग स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप। ओके, सेल्फ अवेयरनेस इंपॉर्टेंट होता है हमारे पर्सनल ग्रोथ के लिए और स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप के लिए। पर्सनल ग्रोथ होता ही है, जैसे प्रीवियसली हमने डिस्कस किया कि सेल्फ अवेयरनेस से क्या होता है, हमें हमारे जो बैड थॉट्स है या वेस्ट थॉट्स है या जो भी थॉट्स होते हैं, फीलिंग्स होते हैं या हमारा बिहेवियर होता है, हैबिट होता है, हम उसे एलिमिनेट करते हैं। हमारा एक ट्रू पर्सनल ग्रोथ होता है और जिसकी वजह से हमारा रिलेशनशिप एक और बढ़ता है। ये होता है सेल्फ अवेयरनेस। सेल्फ अवेयरनेस means understanding own emotion, thought and value, in what way your behavior is and how it affect those around you। ये important होता है। सेल्फ अवेयरनेस से क्या होता है कि एक्चुअली आपका जेन्युइन बिहेवियर आपको पता चलता है। okay? और उसका एक्चुअली उसका इम्पैक्ट कैसे होता है सराउंडिंग में। जैसे हमारे सराउंडिंग में जितने भी लोग होते हैं या इन फैमिली और इन ऑफिस और इन वर्किंग एनवायरनमेंट और इन कॉलेजेस, वहाँ पे हमें कैसे परसीव किया जाता है, हमारा बिहेवियर कैसे परसीव किया जाता है। जैसे आप अगर ज्यादा बात, इफ यू डोंट टॉक टू मच, पीपल परसीव यू एज अ रूड पर्सन या एटीट्यूड पर्सन। ओके, if you talk too much, then they can take you as granted। So it is very important to know own emotion, own behavior। आपकी बॉडी लैंग्वेज, कभी कभी your body language says a lot about you। Sometimes people perceive you as negative person or positive person depend on your body language। ओके, तो उसके बारे में भी सेल्फ अवेयर होना चाहिए। सेल्फ अवेयरनेस का self-awareness, it is one of the most important soft skills। Self-awareness leads to be more authentic and different from crowd। Self-awareness से क्या होता है, we are more authentic, हम ज्यादा authentic बनते हैं and we are genuine and different from mob or crowd। Self-awareness means self-reflection। Self-reflection होना important, ठीक है। आस्किंग फॉर कंस्ट्रक्टिव फीडबैक फ्रॉम ट्रस्टेड सोर्सेज कैन रिवील ब्लाइंड स्पॉट। एरियाज ऑफ इम्प्रूवमेंट होते हैं। एरियाज ऑफ इम्प्रूवमेंट का पता कैसे चलता है, सेल्फ अवेयरनेस से। और उसका फीडबैक कौन दे सकता है, जिसपे आपका ट्रस्ट होता है, जो आपको कंस्ट्रक्टिव, रियलिस्टिक, स्ट्रेट फॉरवर्ड फीडबैक दे सकता है। ही इज ओनली योर फ्रेंड, अ फ्रेंड हु help you or who give you a proper direction, a proper, a genuine feedback
is your friend. Okay? So you can ask for constructive feedback. Next is why self-awareness is important. Okay, why self-awareness is important? Having self-awareness gives us the power to influence outcome. क्या होता है जो सेल्फ अवेयरनेस होता है ना, वो एक पावर देता है टू इन्फ्लुएंस आउटकम। जैसे इसका मीनिंग क्या हो सकता है कि जो सेल्फ अवेयरनेस खुद के बारे में जब हमें पता होता है, हमारे नेगेटिव पॉइंट्स के बारे में हमें पता होता है, तो हम उसे इम्प्रूव करते हैं। तो जो भी आउटकम्स आते हैं उसे हम चेंज कर सकते हैं, बिकॉज नाउ वी आर नॉट द सेम पर्सन. So if we are not the same person, same outcome is not going to happen. Okay, so self-awareness gives us the power to change output, because we are not the same person, we are different one due to self-awareness, because we are now asking ourselves a very complicated or uncomfortable question about own thought, emotion, and we are now developing or improving own emotion, thoughts, feeling, action, behavior, body language, because we have we must develop that strong impact around different people, around the people that we call society. Okay? So that type of confidence must be in each one of us, and that comes through self-awareness. So each time I'm going to say self-awareness is one of the most important soft skill everyone must develop. It's very important for everyone to develop self-awareness. Asking uncomfortable question to own how I behave, how I how is my body language, why I'm angry, why I'm sad. Okay, so such type of questions are very important. Self-awareness frees us from assumption and biases. Assumption and biases. Biases means discrimination, भेदभाव. Okay, self-awareness frees us from assumption and biases. जैसे सोसाइटी में जजमेंटल स्टेटमेंट, या हम कभी कभी जजमेंटल हो जाते हैं, जज करते हैं लोगों को उनके अपीयरेंस से, या उनके how much he earns, or in which society he lived, or his background. Judgmental होते हैं, and it is not very important, because we have to think before giving judgment. ओके, एक जज में जो कोर्ट होता है वहां पे भी कितना थिंकिंग किया जाता है, या कितना एविडेंस देखा जाता है बिफोर अनाउंसिंग एनी डिसीजन. लेकिन बट वी आर द पीपल, वी जस्ट give our judgment very quickly, and just without any thinking or without any in-depth in-depth information. So self-awareness frees us from such type of negative thinking. And the self-awareness gives us power to think, to understand, or to identify the genuine information, or to correct the correct genuine information about that person, and then have conclusion, or have mm, statement or judgment. But don't be so judgmental, or don't be so quick to judge anyone, because uh, everyone is going through some tough situation. So it is a very important for each one of us to think before announcing, or before um, coming to any conclusion, before before saying anything rubbish, or before saying concluding any judgment. Don't be so judgmental. So self-awareness
frees us from assumption and discrimination. Then higher level of happiness. When we everyone works on ourselves own, he is a happy person. Okay, high level of happiness, because when we work towards self improvement, towards personal growth, we are working on ourselves. We are the architecture of own mind, body, and soul. So it creates happiness because now we are working on our own self personal growth. It improves relationship. Yes, of course. When we are self aware, we have a strong relationship with own, and when we have a very strong relationship with own, we can easily connect with different types of people in very constructive manner. That gives us more satisfaction and happiness. Self-awareness means self-responsibility. Okay, it is very important. Self-responsibility. What my thinking is, our life is totally 100% responsibility of own. We can't blame others. Yes, mistake happens. There are some people who, by their mistake, they have spoiled the life of other. But on the other hand, it is our self responsibility. So self responsibility gives us self awareness. Sorry, self awareness gives us self responsibility. It makes us responsible person, and each one of us should be responsible person toward our society, toward our country, towards your own family, toward yourself also. Okay, so it starts from asking uncomfortable question to yes, uncomfortable, tough question. It there is a saying that it is very important to be tough with own self-discipline. Self-discipline is a very tough job. If we are self-disciplined, then we can set boundaries or discipline or rules and regulation on others also. So it starts from own. So self-awareness helps to take full responsibility rather than blaming other. हाँ, दूसरों को दूस, इसने क्या किया, या ये कैसा है, वो कैसा है, इससे अच्छा मैं कैसा हूँ, मुझे मेरी लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना है. आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर माई लाइफ. तो ये कहाँ से आता है? सेल्फ अवेयरनेस से आता है. तो ये इम्पोर्टेंट, ये सॉफ्ट स्किल का इम्पोर्टेंट होता है हमारे पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में, दैट वी बिकम मोर रिस्पॉन्सिबल. जब हम ज्यादा रिस्पॉन्सिबल होते हैं हमारे खुद के लाइफ के बारे में, तब वी आर लिविंग मोर सेटिस्फाइड लाइफ. ओके, सो it gives us power to tackle mental mental डिफिकल्टी. जितना भी मेंटल स्ट्रेस होता है या एंजाइटी होती है या डिप्रेशन या चैलेंजिंग सिचुएशन होते हैं, जब हम खुद का सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं rather than blaming others, because no one is going to save you, no one is going to help you. You have to take your own responsibility because life is yours, not for others. Try to understand. So self-awareness helps to take full responsibility rather than blaming others. Then self-awareness helps in understanding life process and more satisfaction with being ambitious. जैसे आपने देखा होगा कि आप भी ambitious हो. ambitious रहना important है. Okay, ambitious means that dreams, luxurious life, lavish life, important, and there's nothing wrong in to be ambitious, but before ambitious, it is very important to be thankful for what you have. First be thankful for what you have, and then be ambitious for what you have to achieve. So
It is the balance of satisfaction and to be ambitious. Okay, there is a balance between satisfaction and ambition. So self-awareness helps in understanding life process and more satisfaction with being ambitious. Self-awareness gives clarity in living more genuine life. जैसे स्टार्टिंग में डिस्कस किया था कि जो सेल्फ अवेयरनेस होता है वो हमें एक स्ट्रेट फॉरवर्ड थिंकिंग देते हैं या एक क्लैरिटी देते हैं. हमारा जो जेन्युइन पर्सन होते हैं, जो जेन्युइननेस होती है वो बाहर निकलती है, उसका रिफ्लेक्शन बाहर लोगों को दिखाई देता है कि हाँ ये तो जेन्युइन पर्सन है. यस, ही इज he is not a good person, he is not a nice person, he is a genuine person. Okay, it is important to be genuine person rather than good person or nice person. Okay, अभी हम जो भी स्किल्स जैसे देखे, कम्युनिकेशन स्किल, टीम वर्क स्किल, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल, एडेप्टेबिलिटी स्किल, उसके बारे में थोड़ा और डेप्थ में देखेंगे, मतलब पॉइंट वाइज. ओके, अब तक तो आपने देखा है कि सेल्फ अवेयरनेस क्या होता है या एडेप्टेबिलिटी क्या होता है, उसके बारे में हमने देखा है. जैसे पर्सनल लाइफ में, प्रोफेशनल लाइफ में सॉफ्ट स्किल का इंपॉर्टेंस क्या होता है, ये भी आपने देखा है. बट अभी हम क्या देखेंगे कि जो कम्युनिकेशन स्किल या टीम वर्क होता है उसके बारे में थोड़ा इन डेप्थ देखेंगे. तो आप अभी स्टार्ट करते हैं कम्युनिकेशन स्किल से. तो कम्युनिकेशन स्किल में क्या आता है? इट इंक्लूड बोथ वर्बल एंड रिटन कम्युनिकेशन. ओके, वर्बल मीन्स ओरल कम्युनिकेशन, रिटन मीन्स to write as well as active listening. Understand, listen means to understand what is said to you. Okay, कम्युनिकेशन में जो मैसेज है उसे समझ में आना चाहिए. Effective communication is crucial for conveying ideas clearly and understanding others. Expressing ourselves और दूसरों को समझने के लिए communication skill important है. Oral communication होता है, जैसे now I am talking, it is verbal communication. Oral communication, if someone is drafting a email, that is written communication. Okay, नेक्स्ट होता है, ये important है, जैसे प्रेजेंटेशन प्रिपेयर करना है, प्रोजेक्ट है आपका कंपनी में, उसे प्रेजेंट करते आना चाहिए आपको. तो वर्बल कम्युनिकेशन हेल्प्स यू. रिटन कम्युनिकेशन, यू शुड नो हाउ टू ड्राफ्ट एन ईमेल, वो रिटन कम्युनिकेशन में आता है. ओके, इफेक्टिव लिसनिंग, you have to understand your teammate. Okay, so then teamwork and collaboration, being able to work effectively with others, share responsibility and contribute to a common goal is essential in many workplace. ठीक है, इन प्रोफेशनल लाइफ टीम वर्क इज वेरी इंपॉर्टेंट. एक साथ काम करना important होता है, because different type of people come together and work toward a common object. Okay? Then problem solving means the ability to understand condition, which help to identify issue and then develop effective solution is highly valued in both personal and professional life. Okay, problem solving, द एबिलिटी टू अंडरस्टैंड कंडीशन. प्रॉब्लम सॉल्विंग में मैंने कहा था कि जो रूट कॉज है उसे आइडेंटिफाई करना पड़ता है, उसके बाद उस पर इफेक्टिव सोल्यूशन देना पड़ता है. ओके, सो प्रॉब्लम सॉल्विंग में इंपॉर्टेंट है टू आइडेंटिफाई प्रॉब्लम, वो टफ होता है, तो उसके लिए क्रिटिकल थिंकिंग या एनालिटिकल स्किल डेवलप करना इंपॉर्टेंट है. उसके बाद एडेप्टेबिलिटी, जैसे हमने स्टार्टिंग में डिस्कस किया था कि ऑर्गेनाइजेशन ऐसे कैंडिडेट की नीड सर्च में होती है जो कहाँ पे भी एडजस्ट कर पाए या कहाँ पे भी फिट हो पाए विथ चेंजिंग कंडीशन, चेंजिंग एनवायरमेंट, वर्किंग एनवायरमेंट, जो खुद में टेक्नोलॉजी के साथ या चेंजिंग टेक्नोलॉजी के साथ वो खुद में अपडेशन ला सकता हो, ऐसा कैंडिडेट हम सर्च करते हैं, ऐसा डिमांड होती है हर एमएनसीज की. सो एडेप्टेबिलिटी स्किल इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट. टाइम मैनेजमेंट स्किल, effectively manage one time, prioritizing tasks and staying organized are essential for productivity and meeting deadline. Okay, productivity means output. Okay, and meeting deadline, जैसे time management, जैसे स्टार्टिंग में डिस्कस किया था कि प्रायोरिटाइज टास्क विद
योर टाइम, ये मैनेज करते आना चाहिए, जिससे जो टास्क है, इंपॉर्टेंट टास्क है, उसे ऑर्गेनाइज वे में आइडेंटिफाई करने के बाद उस पे काम करना इम्पोर्टेंट है, और उसे विद इन अ डेडलाइन कंप्लीट करना भी इम्पोर्टेंट। ओके, दैट इज ऑल अबाउट टाइम मैनेजमेंट। उसके बाद लीडरशिप स्किल, मैंने कहा था दिस इन्वॉल्व्स द एबिलिटी टू लीड द ग्रुप ऑफ पीपल विद एन एग्जांपल, इट इज टोटली डिफरेंट फ्रॉम बीइंग अ बॉस। ओके, लीडरशिप स्किल में क्या होता है? डिसीजन मेकिंग स्किल, critical thinking, and setting an example and taking responsibility for failure and give credit to your team, वो होता है एक अच्छा लीडर। एग्जाम्पल, महेंद्र सिंह धोनी। Next, creativity and innovation, the ability to think outside the box with generation of new ideas and find creative solution is increasingly important in today's competitive age. The ability to think outside the box. Yes, it is very important to think outside the box, but what is inside the box is very important, such so that we can think very easily what is outside the box. Okay, outside the box means to think in a very unique way, to think in a very what we can say different from others. That is creativity. Innovation means to put your ideas into action. Okay, to put your ideas into implementation, and that is very important. Okay, lot of us, yeah, everyone has many ideas, but that idea is waste until we until what action is very important, because everyone has to convert that ideas into action, then it is impactful, then it is in use, because we are wasting our time just thinking about our ideas, but instead of thinking, if we implement or if we take a chance, we don't know what is going to happen. So it is very important to take action. So innovation means putting your ideas into actual execution. Then conflict resolution, the ability to meditate disagreement and resolve conflict peacefully is valuable skill in any team or organization. देखिए, कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन के बारे में हमने डिस्कस किया था कि कॉन्फ्लिक्ट होता क्यों है। ओके, होता क्यों है, या मिस्टेक किसकी मिस्टेक है, बट कॉन्फ्लिक्ट कैसे रिजॉल्व किया जाता है। फर्स्ट, प्रॉब्लम क्या है, रादर देन पर्सनल अटैक, या रादर देन disagreement, each one of us should understand what is the problem. We should more harsh, or we should more focus on problem, because we have to solve the problem. We have to solve it in a peaceful way rather than complaining about each other. हमें ब्लेमिंग गेम नहीं प्ले करना है, हमें कंस्ट्रक्टिव मैनर में हमारा कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व करना है पीसफुली। इससे क्या होता है, हमारे रिश्ते भी अच्छे रहते हैं, हार्मनी भी मेंटेन होती है, और उसके बाद ये एक स्किल डेवलप हो जाती है। रादर देन ब्लेमिंग अदर, वी टेक फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी अबाउट प्रॉब्लम। ओके, देन आता है वर्क इथिक। मैंने कहा था वर्क इथिक में वर्क मैनर, डिसिप्लिन, वर्किंग कल्चर में एक डिसिप्लिन होता है, जैसे डेडलाइन दी जाती है, विद इन डेडलाइन हमारा काम होना चाहिए, या टाइमिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, प्रायोरिटाइज अवर टास्क। जो एम्प्लॉय हमेशा टाइम पर ऑफिस जाता है, या टाइम का पक्का होता है, वो विद इन डेडलाइन हमेशा टास्क कंप्लीट करता है। ही प्रोग्रेस, ही इज अबाउ, ही इज सेटिंग एन बेंचमार्क, ही इज सेट एन एग्जाम्पल अमॉन्ग अदर एम्प्लॉय। सो ये किसके वजह से होता है? स्ट्रॉन्ग वर्क इथिक, a strong work ethic which consists of responsibility and realistic attitude toward work is highly valued by any organization. Organization are in search of such candidate who is very or well organized or disciplined. Next, okay, so अब तक क्या क्या पढ़ा है?
उसके बारे में क्विक रिवीजन कर लेते हैं। ठीक है, सो स्टार्टिंग में सॉफ्ट स्किल होता क्या है, जैसे पावरफुल स्किल है या कॉमन स्किल है या पर्सनल स्किल है या सोशल स्किल है। उसके बाद उसका इम्पोर्टेंस पर्सनल लाइफ प्रोफेशनल लाइफ में सॉफ्ट स्किल क्यों होने चाहिए। जैसे अभी तक तो आपको पता भी हो चुका होगा या आपको आपके दिमाग में फिट भी हो चुका होगा, या कम्युनिकेशन स्किल, इंटरपर्सनल स्किल, उसके बाद negotiation skill, इमोशनल इंटेलिजेंस, एम्पैथी, सेल्फ अवेयरनेस तो आप कभी भूल ही नहीं पाओगे, बिकॉज सेल्फ अवेयरनेस से सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है, सेल्फ अश्योरेंस आता है, सेल्फ कॉन्फिडेंस आता है, हमारा पर्सनल ग्रोथ होता है, हमारा पॉजिटिव इम्पैक्ट गिरता है पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ में। तो ये सॉफ्टवेयर कम्युनिकेशन अच्छा होता है, कम्युनिकेशन अच्छा होगा तो इंटरेक्शन अच्छा होता है, इंटरेक्शन अच्छा होगा तो हमारा ट्रस्ट बिल्डअप होता है, ट्रस्ट बिल्डअप होता है तो उसके साथ हमारा स्ट्रॉन्गर रिलेशनशिप होता है। सेल्फ अवेयरनेस से हम खुद के बारे में अच्छा जान पाते हैं, जो हमारे इसमें बैड हैबिट, बैड थॉट, बैड फीलिंग्स होती है उसे हम एलिमिनेट कर पाते हैं, हमारा पर्सनल ग्रोथ होता है, हमारा पॉजिटिव इम्पैक्ट गिरता है। ठीक है, लेकिन हम इसके भी बियॉन्ड अभी जो नेक्स्ट टॉपिक इम्पोर्टेंट सॉफ्ट स्किल, जो सॉफ्ट स्किल के अंडर आते हैं, वो वो है इमोशनल इंटेलिजेंस। ओके, सो इमोशनल इंटेलिजेंस के बारे में हमने डिस्कस किया था, लेकिन अभी हम थोड़ा और उसे एक्सपांड करेंगे, उसे और एनहांस करेंगे। ओके, सो नेक्स्ट important topic we are going to discuss is all about emotional intelligence. So first is emotional intelligence is the ability to manage both your own emotion and understand the emotion of people around you. Emotional intelligence is the ability to manage both your own emotions, खुद की इमोशन मैनेज करना, एंड अंडरस्टैंड इमोशन ऑफ पीपल अराउंड यू। सर कितना टफ टास्क है ये। यस, एक्चुअली emotional intelligence is very tough, because to understand other people is very tough. Why? Because we are not understanding own emotion. Then how can we understand other emotion? So the first thing is of self intelligence is to identify own emotion, manage own emotion, understand own emotion, and then shift the understanding of emotion of other people. Okay, then emotional intelligence help in slow down your reaction to emotion. Next time you feel angry, try to sit with it before rushing it. Yes, it is tough to act, but yes, more number of attempts are important. I must say practice is important. Practice is more powerful than talent. Emotional intelligence helps in slow down your reaction. जैसे मैंने कहा था कि we react very fast. Now it is very important to identify our emotion when we react. When I react very fast, first I will identify my emotion, that in such condition I react very fast. Next time I try to control my reaction. Yes, it is not going to happen overnight, it is not going to happen at once, but I will do it n number of times, because I have to build emotional intelligence. I am a very in people must say that this is a very emotional intelligent person, because he is using his brain with heart. He is a very straight thinking person. So he is not emotional sensitive or emotional fool. He is using his emotion in a very constructive manner, in a very positive manner, or we I must say in a very realistic manner. So the next question is, why are you angry? Did someone upset you? Find out why. जब भी आपको गुस्सा आता है ना, गुस्सा आता है, लगता है कि हाँ उसे खत्म किया जाए या कुछ कहा जाए, कोई आपको अपसेट कर, आपको गुस्सा दिलाता है, तो आपका जो रिएक्शन है उसे कंट्रोल कैसे किया जाता है? फर्स्ट फाइंड आउट व्हाई।
कि why I am angry, मुझे गुस्सा क्यों आता है, ऐसी ऐसा ऐसा क्या, ऐसी कौन सी बात है जिससे मैं अपसेट होता हूँ, जिससे मेरा मूड खराब होता है, या आई एम गेट फ्रस्ट्रेटेड और आई एम गेट इरिटेटेड. Just write down and then try to improve it. It is not going to happen once, okay? It is a very tough, but I know you are not, you are a very tough person. You are a very powerful person. That's why a powerful and tough job is searching you. Tough, you are not searching tough job or challenging job. A challenging job and a tough job is have search you. That's why you are powerful. So in such manner, change your perspective towards life or towards any situation rather than uh, blaming others, rather than try to change other, change yourself. I'm not saying that you must change completely according to people. I am saying change yourself for your own satisfaction, for your own happiness, for your own personal good. That changes are very important, and that is called more realistic and impactful change, and that is that you can't find in any textbook or in any seminar. Life teaches us. Okay, so be grateful and be thankful to God. The next is be realistic is one good way to use emotion in a more proper way, and no one is good at everything, and that's okay. See, uh, sometimes we are live in a very imaginary condition. समटाइम्स हमें लगता है कि ये होगा वो होगा, या मैं ऐसा हूँ मैं वैसा हूँ, लेकिन हमें कोई रियलिस्टिक वे में बताता नहीं कि एक्चुअली क्या होता है, या हु आई एम. एंड वी कांट एक्सेप्ट, हमें स्वीकारना चाहिए कि हाँ, आई एम नॉट गुड एट certain thing. No, I can't compete or I can't do such thing like other. We are not accepting it, and that's why we we are uh, we are toxic to our own. Sometimes we are only toxic to our own self. So to remove toxicity or to be very happy, to be very emotional, intelligent person, it is very important to be realistic, to accept what is reality, to accept that yes, I am lacking something. I am not good like other. Stop comparing. Stop comparing. Stop following others blindly. Stop trusting fake people. Try to or attempt to be more realistic by identifying more genuine information, because information is very important. Okay, stop comparing. If you want to compare, compare with yourself, compare with your previous one. Okay, because personal growth start from you, not from others. Okay, you are not here to chase people. Here you are here to live your life. Okay, that's why time is very important. Use your time for your own benefit, for your own self improvement. Okay, and that is a very beautiful gift, a beautiful opportunity. Okay, that life has given us. So know yourself. Okay, know yourself. Again, self awareness. Self awareness is very important. Then emotional intelligence means perceiving emotion relates to how well you can identify that you or someone else feels. You can do this with non-verbal signal like facial expression or body language. इमोशनल इंटेलिजेंस कैसे डेवलप किया जाता है? जैसे सेल्फ अवेयरनेस से खुद के बारे में हमें पता चलता है, या खुद को हम अंडरस्टैंड कर पाते हैं.
वैसे ही हम दूसरों को भी अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि उसका फेशियल एक्सप्रेशन या उसका बॉडी लैंग्वेज बहुत कुछ कह देता है, तो उससे भी हमारा इमोशनल इंटेलिजेंस ग्रो होता है। It is how you respond internally to this emotion, both in terms of how much you prioritize them and how seriously you take them. Okay, क्या होता है कि it is how you respond internally to the emotions होते हैं, जैसे गुस्सा गुस्सा आता है या हम हैप्पी होते हैं या हम सैड होते हैं, हमारा मूड जैसे हम फ्रस्ट्रेट होते हैं, इरिटेट होते हैं, तो ये इमोशन इंटरनली होते हैं। हम इसे रिस्पॉन्ड कैसे करते हैं, इसे हम प्रायोरिटाइज कैसे करते हैं और इसे हम कितना सीरियसली लेते हैं, ये भी इम्पोर्टेंट है। अंडरस्टैंडिंग इमोशन इंक्लूड हाउ वेल you are able to perceive the meaning behind them and interpret what caused them। कि अंडरस्टैंडिंग इमोशन मीन्स टू आइडेंटिफाई कि इमोशन क्यों, कहाँ से ये इस इमोशन का रूट कॉज क्या है, उसका मीनिंग क्या है, why such type of emotion are happening within me। जब हम इसे आइडेंटिफाई करते हैं तो वी आर अंडरस्टैंडिंग अवर ओन इमोशन। ओके, देन what do you mean by emotion? Okay, emotions are physical and mental state। Okay, before understanding the meaning of emotion, emotions are totally means it is completely connected with your feelings, thought and behavior। Okay, there is not a certain particular definition about emotion। Okay, so we are moving ahead। Emotions are physical and mental state। हमारे जो फिजिकल और मेंटल कंडीशन होता है या स्टेट होता है, ठीक है, एक कंडीशन होती है या स्टेट होता है एक, तो वो उसे हम इमोशन कह सकते हैं। जैसे ये न्यूरो फिजिकोलॉजिकल चेंजेस होते हैं। न्यूरो फिजिकोलॉजिकल चेंजेस में मेडिकल टर्म होता है, वो हम एक जब भी हम न्यूरो फिजिकल फिजियोलॉजिकल टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे, जैसे आगे जाके हम हरासमेंट या बिहेवियर चेंजेस या हमारा मूड चेंजेस कैसे होता है बोथ इन पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ, तो न्यूरो फिजिकल टॉपिक आएगा, उसे हम डिटेल में वहां पे पढ़ेंगे। लेकिन अभी के लिए आप इतना समझिए या इतना ध्यान में रखिए कि इमोशन ये फिजिकल और मेंटल स्टेट, ओके, और ये किससे कनेक्ट होता है, हमारे थॉट से, हमारे फीलिंग से, हमारा जो बिहेवियर चेंजेस होता है। और जब भी हम सैड होते हैं या खुश होते हैं, कभी कभी हमारा सैडनेस का डिग्री हाई होता है, कभी कभी हमारा सैडनेस का डिग्री कम होता है, कभी कभी हमारा हैप्पीनेस का डिग्री हाई होता है, कभी कभी हैप्पीनेस का डिग्री कम होता है। उसे बहुत गुस्सा आता है, उसका उसका गुस्सा सिर्फ 2 मिनट का या 3 मिनट का होता है, मतलब उसका भी डिग्री होता है ना। हम जब कहते हैं कि उसका गुस्सा बहुत, उसे बहुत गुस्सा आता है, बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, उसका गुस्सा बहुत कम आता है, उसे गुस्सा आता है लेकिन बहुत कम आता है, मतलब emotion sometimes associate with degree। Okay, they are reaction। Okay, see, emotion are the reaction to a certain condition or situation। key components of emotional intelligence। Okay, देखिए, अगेन सेल्फ अवेयरनेस आ गया, सेल्फ रेगुलेशन आ गया, मोटिवेशन आ गया, एम्पैथी आ गया, सोशल स्किल आ गया। ठीक है, सेल्फ अवेयरनेस के बारे में आपको पता है। सेल्फ अवेयरनेस मीन्स हु आई एम, asking uncomfortable question, eliminating bad habit, thoughts, feelings, condition, taking full responsibility। Self-awareness important है। Self-regulation, regulation means high, medium, low, पता है ना, जैसे बटन्स होते हैं बटन, तो वैसे हमारा इमोशन के बटन्स होते हैं। कभी कभी हम we react high, we react very powerful, in a very powerful way to certain condition। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू सेल्फ रेगुलेट अवर ओन इमोशन। खुद के इमोशन को कैसे सेल्फ रेगुलेशन, कैसे सेल्फ रेगुलेट करते आना चाहिए। जैसे हमारा जैसे हमें पता है कि यस आई एम वेरी रिएक्टिंग इन अ वेरी
harsh, in a very harshful way, or in a very means negative perspective. I am a very aggressive person sometimes. Okay, so you have to manage your aggressiveness to certain condition. If you are very high in aggression, move to medium, then to low, because it is very important. You can't eliminate aggressiveness from your body, from your mind immediately. You have to shift aggressiveness to certain degree, from high to medium, then medium to low. If you are not getting happy, you have to identify your own emotion, because everyone is getting happy. So you are happy, but your degree of happiness is where in a state of low. Then you have to regulate, you have to shift your degree of happiness to medium, then to high. That's how we can shift our emotion. So self-regulation is very important. Then motivation. Okay, motivation means to motivate by setting an example. Emotional intelligence means when you are emotional intelligent person, or you have developed emotional intelligence skill, you can motivate people. Yes, you can motivate, you can solve people difficulties, you can uh, build strong relationship with people, you can identify people emotion and start understanding them, and that's how people uh, come towards you for help, and you, by motivating them, can solve their problem. And that's how emotional intelligence skill works. Then empathy. I have already discussed about empathy, but again, empathy is very important. It is totally different from sympathy. Empathy means to be in other shoe. To be in other shoe means to understand other feeling, rather than sympathizing, rather than mm, just talking any talking like very talking very high. It is very important to be realistic. Empathy means to be very trustworthy person, to be realistic person. Yes, um, means that, yes, it is very hard if someone is going to some trauma or some anxiety. We can't just say that no, it is going to vanish. No, it is very important to say realistic, to be realistic. Yes, it is very tough situation. Yes, you have to be powerful, or you have to understand yourself. So in empathy, to be empathic person, genuineness, realistic realistic attitude, and genuine person and more realistic person is very important, rather than making making other person happy for just a temporary moment. It is very important to make him realize the reality, make him realize the realistic, the uh, what is going to happen. That's how empathy work, or empathic person work, or he, that's how he is different from other person. Then social skill. Yes, uh, previously पहले सॉफ्ट स्किल मीन्स क्या होता है, सोशल स्किल भी होता है. जैसे सॉफ्ट स्किल एक हमें सोशल कंडीशन में सोशल अवेयरनेस देता है, या सोशल कॉन्फिडेंस देता है. ठीक है, जैसे हमने स्टार्टिंग में डिस्कस किया ही था. बट जो सोशल स्किल होते हैं, उसमें सोसाइटी में कैसे बिहेव किया जाता है, या इंटरेक्शन कैसे किया जाता है, या कैसे पार्टिसिपेशन किया जाता है, वो हमें सॉफ्ट स्किल सिखाता है, या सॉफ्ट स्किल डेवलप होने के बाद हमें पता चलता है. तो इमोशनल इंटेलिजेंस में सोशल स्किल भी आती है. सोशल स्किल मीन्स as we as human being is a social animal. He live in society. He has to interact with other people.
He had to participate in both working condition, in both personal and professional life. That's how it works. Then benefit of emotional intelligence. Same benefit. Improve communication, stronger relationship, effective conflict resolution, increase resilience. Okay, this new word comes up. Um, Increase resilience. Resilience means to bounce back from stressful or challenging situation. Means never give up attitude. Okay. Enhance leadership skill. Leadership skill means decision making power, then critical thinking, delegation. Okay. So this is all about emotional intelligence. And emotional intelligence start with self-awareness. Okay. Then its emotional intelligence skill can be achieved by practicing emotion, active listening and feedback from trusted one. ओके, इमोशनल इंटेलिजेंस स्किल कैसे अचीव कर पा सकोगे आप कि खुद के इमोशन को स्टार्ट कीजिए समझना, खुद को समझना स्टार्ट कीजिए, सेल्फ अवेयर कीजिए, खुद को क्वेश्चन कीजिए, लिखना स्टार्ट कीजिए। लिखना स्टार्ट कीजिए मीन्स खुद के बारे में स्टार्ट कीजिए कि हाँ, हु आई एम, बस जस्ट नेक्स्ट नेक्स्ट। ओके, सो नाउ we are on the end, so we are on conclusion of सॉफ्ट स्किल। सो अब तक हमने क्या देखा, सॉफ्ट स्किल क्या होता है। ओके, सॉफ्ट स्किल क्या होता है, देन वी हैव discuss its important in personal and professional life, then we have discussed about why soft skill is important, क्यों पढ़ना चाहिए, then we have discussed emotional intelligence, then we have discussed types of soft skill, then we have discussed self awareness. Okay, then we have discussed why emotional intelligence is important. So these are very basic and in-depth soft skill. Okay, so in conclusion, what I want to tell you, or I want to discuss, that be realistic, be a very real person, be a very realistic person. Don't be such person that people can't understand you. First, understand yourself. खुद को समझिए आप। इन इन कंक्लूजन, जो भी कंक्लूजन है सॉफ्ट स्किल का, वो तो मैं पढ़ूंगा, लेकिन माय पर्सनल कंक्लूजन और माय पर्सनल डिस्कशन क्या है कि आप जितना हो सके खुद के बारे में जानिए। ठीक है, आपको पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में सॉफ्ट स्किल डेवलप करना है, यस, इम्पोर्टेंट, लेकिन सॉफ्ट स्किल कैसे डेवलप किया जाता है, खुद के बारे में सेल्फ अवेयरनेस। सेल्फ अवेयरनेस मीन्स खुद के बारे में सोचिए, खुद को समझिए कि व्हाई आई बिहेव इन अ सर्टेन वे। ये एक एग्जांपल दे रहा हूं मैं कि आप खुद क्वेश्चन कैसे पूछ सकते हो कि क्यों इसी वक्त मैं सोता हूँ, क्यों मैं सोशल मीडिया पे इतना टाइम स्पेंड करता हूँ, सही में कुछ इंपॉर्टेंट टास्क होते हैं या मुझे आदत है। अगर ये आदत अच्छी नहीं है तो ये आदत मुझे चेंज करनी चाहिए। ठीक है, स्टार्टिंग में टफ होगा, यस, आई एम नॉट सेइंग दैट इट इज गोइंग टू बी वेरी इजी, इट इज वेरी टफ, ओके, बट टफ एंड चैलेंजिंग, एक्सेप्ट लाइफ एज अ टफ जॉब, एज अ चैलेंजिंग जॉब। सो कभी कभी क्या होता है कि वी वेस्ट आवर टाइम इन अनवांटेड थिंग, वी डिजायर मोर, वी थिंक मोर, बट वी डोंट टेक एनी एक्शन। ओके, सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए rather than blaming others। तो ये कंक्लूजन में इंपॉर्टेंट क्या है, सेल्फ अवेयरनेस, उसके साथ कम्युनिकेशन स्किल, इंटरपर्सनल स्किल, ओके, देन रेजिलियंस स्किल, एडेप्टेबिलिटी स्किल। जैसे मैंने कहा है कि पर्सनल प्रोफेशनल लाइफ में एडेप्टेबिलिटी स्किल इंपॉर्टेंट होता है, लीडरशिप स्किल
यस लीडरशिप स्किल, कम्युनिकेशन स्किल, उसके बाद डिसीजन मेकिंग पावर स्किल, ओके, एम्पैथी, इमोशनल इंटेलिजेंस, हाँ, सेल्फ अवेयरनेस। लेकिन एडेप्टेबिलिटी मीन्स कि ऑर्गेनाइजेशन आर इन सर्च ऑफ सच पीपल हु कैन अडेप्ट, हु कैन एडजस्ट इन एनी कंडीशन, okay, who can upgrade with changing technology or with changing scenario of workplace. In conclusion, soft skills are becoming important in today's world. Okay, it is realistic that soft skills are going to be important than education, than formal education. They are important for building strong relationship and managing stress and obstacle. Yes, managing stress and obstacle. Lot of stress and obstacle come from ignoring condition. We ignore. That's why stress and obstacle comes. Soft skill give us power to face it. By developing your soft skill, each one can improve chances of success and advance career. Yes, it is important. Because chances of success and advance in career improve. Because when we develop soft skill, we are upgrading ourselves. We upgrade our own personal ability. We are in a state of personal growth, and when we are in a state of personal growth, we have a positive impact both in personal and professional life. Soft skill can be thought of as a people skill. Yes, सॉफ्ट स्किल क्या होता है? पीपल स्किल होता है। जैसे मैंने कहा है कि ह्यूमन बींग सोशल एनिमल होता है, उसे इंटरेक्शन करना इंपॉर्टेंट होता है, कम्युनिकेशन स्किल आना इंपॉर्टेंट होता है। सो सॉफ्ट स्किल क्या होता है? पीपल स्किल होता है डायरेक्टली। सो दिस वाज ऑल अबाउट सॉफ्ट स्किल। सो आई होप you understand. I hope you are going to upgrade yourself. मुझे it was all about introductory part of soft skill, कि कौन से सॉफ्ट स्किल होते हैं, उसका इम्पोर्टेंस पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में क्या होता है। नेक्स्ट जो भी वीडियो होगा, जो भी एक ट्यूटोरियल होगा, उसमें मैं हाउ टू बिल्ड और हाउ टू ग्रो, हाउ टू डेवलप सॉफ्ट स्किल के बारे में एक वीडियो बनाऊंगा, ठीक है, जिसमें कि एक्चुअली इन प्रैक्टिकल वे सेल्फ अवेयरनेस, emotional intelligence, empathy, resilience skill, communication skill, leadership skill, okay, then adaptability. ये स्किल को इम्प्रूव कैसे किया जाता है, या डेवलप कैसे किया जाता है, या आइडेंटिफाई कैसे किया जाता है, इसके बारे में वो वीडियो होगा। ओके, ये वीडियो या ये जो भी पार्ट है, ये इंट्रोडक्टरी पार्ट है, जिसमें सॉफ्ट स्किल का इम्पोर्टेंस हमें पता तो होना चाहिए कि सॉफ्ट स्किल का इम्पोर्टेंस हमारे पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ में क्या होता है। अगर हमें इम्पोर्टेंस ही पता नहीं है, तो व्हाई वी आर गोइंग टू हैव इट। ओके, सो अभी ये इंट्रोडक्टरी पार्ट है, जिसमें हम व्हाट आर सॉफ्ट स्किल, इट्स इम्पोर्टेंट इन पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ, सेल्फ अवेयरनेस, communication skill, emotional intelligence skill, decision making power, time management and other trait we have discussed. उसके बाद में conclusion. Now in next video, अगली वीडियो में how to develop it in practical way, in a practical manner, उसके बारे में हम सीखेंगे। As if now uh, it is the end of our session. अभी जैसे सब कुछ बता चुका हूँ मैं कि सॉफ्ट स्किल के बारे में इंट्रोडक्टरी, एक इंट्रोडक्शन। अभी इसके बाद जितने भी वीडियो आएंगे सॉफ्ट स्किल में, उसमें हम आगे 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 अपग्रेड करते जाएंगे या एडवांस होते जाएंगे। सो कुछ क्वेश्चंस भी रहेंगे या कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चंस मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा, जहाँ पे you have to use your brain with your heart. Okay, so thank you very much, and hope you 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 understand very well, and God bless you. Thank you.